Hi guys, what's up? Welcome back to the channel and welcome back to another video. Today's video is going to be a very interesting one क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉडी शेप वेयर्स या टमी टकर्स के बारे में. Now there are so many different types of tummy tuckers and body shape wears available in the market. So कौन सा खरीदे? ये वाला या this one? We are going to find out in today's video. I'm going to talk to you about all these tummy tuckers, their price range, where to buy them from, किस साइज में खरीदना पड़ता है and कैसे पहनना होता है and every detail of tummy tuckers and body shape wear. So stay tuned with me till the end of the video because video के end में I'm going to wear this tummy tucker which I have with me. उसको मैं different outfits के साथ पहन के आपको दिखाऊंगी so that you will understand clearly कि before wearing tummy tucker and after wearing tummy tuckers क्या difference आता है. And yes, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फिर मेरे वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल by hitting the red subscribe button down below. Also bell icon just next to it. और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक जरूर कर देना. And yeah, without any further ado, now let's just get into the video. So the very first question that can come to your mind is what is a tummy tucker or a body shape wear? So tummy tuckers या body shape wear basically inner wear होता है जो थोड़ा thick material का होता है. इसलिए thick material का होता है ताकि आपकी body के जो specific target area से उसको compress कर पाए और उसको shape में दिखा पाए. And there are basically three types of tummy tuckers or body shape wears available in the market. The first kind is this kind जो थोड़ा brief या पैंटी काइंड ऑफ टमी टकर्स है जो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपके लव हैंडल्स को ही कवर एंड कंसील करता है. दिस टाइप ऑफ टमी टकर्स का प्राइस रेंज 300-350 से लेके 7 and 750 तक है. Now again it differs from brand to brand. The second type of tummy tuckers is the one which is in the form of shorts. ऐसे shorts में आता है ये. This basically helps to cover and conceal your tummy area, आपके love handles, आपके hip, butt and thigh areas. And इसका जो price range है ये 500 से लेके 1000 and 1000 plus तक जा सकता है. Again it differs from brand to brand. The third kind of tummy tucker is in the form of a body suit one. Now this ये आपकी chest के नीचे के area से लेके आपके thighs तक सब कुछ cover and conceal करता है. क्योंकि ये इतना सारे एरियाज को कवर एंड कंसील करता है तो इसका जो प्राइस है थोड़ा हाई है. ये 1500 से लेके 2500 and 2500 प्लस तक का इसका प्राइस रेंज होता है. Now again it differs from brand to brand. The second question that can come to your mind is which one to buy. Honestly now this depends on you, your requirements, your needs, your budget. आपको कौन सा खरीदना है ये वो आप पे डिपेंड करता है. आप चाहो तो आप तीनों खरीद सकते हो या कोई भी एक स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग आप इनमें से कुछ एक भी आप चूज कर सकते हो. So the third question that can come to your mind is where to buy this from. तो अगर आप चाहो तो आप ऑफलाइन ब्रांडेड स्टोर्स में जाके भी खरीद सकते हो या ऑफलाइन लोकल स्टोर्स में जाके भी आप खरीद सकते हो. और अगर आप चाहो तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो. आप ऑनलाइन अमेज़न या फिर ज़िबामे से खरीद सकते हो. मैंने ये जो खरीदा हुआ था इसको मैंने 1 या 1.5 years बैक खरीदा था फ्रॉम अमेज़न एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड क्लोविया. और इसका जो प्राइस था बैक देन वाज अराउंड ₹500. नाउ व्हेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो, फिल्मिंग दिस वीडियो, वी आर इन क्वारंटाइन पीरियड. तो मुझे नहीं पता कि अभी मुझे इसका परचेस लिंक मिलेगा या नहीं. तो मिलेगा तो मैं डाल दूंगी, अगर नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली after this quarantine period is over I'll try to leave the purchase link of this one or something similar to this in the description box for you guys. The fourth question that can come to your mind is कौन से साइज में खरीदे. अगर आप किसी ऑफलाइन स्टोर से जैसे ब्रांडेड स्टोर्स हो गए या लोकल स्टोर्स हो गए अगर आप वहां से खरीदते हो तो आप प्लीज ट्रायल देके खरीदना. या अगर आप ऑनलाइन खरीदते हो तो प्लीज मेजरिंग टेप लो, अपने आप को मेजर करो और फिर खरीदो. अच्छे से साइज चार्ट देख के ही खरीदना. The next question that can come to your mind कि इसको कैसे पहनना होता है and is it advisable to wear this on daily basis या to wear this on occasional basis. आप इसको कोई भी आउटफिट जो आप पहनने वाले हो उसके नीचे आप ये सब शेप वेयर्स या टमी टकर्स पहन के उसके बाद आप अपना आउटफिट पहनना. And is it advisable to wear this on regular basis or not? To be very honest, if you live in a hot and humid country, हम जहाँ पे रहते हैं वो इंडिया है और स्पेसिफिकली मैं कोलकाता में रहती हूँ तो कोलकाता इज वेरी वेरी ह्यूमिड
और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप ऐसे इनर वेयर्स या शेप वेयर्स पहनते हो, बिकॉज ये थोड़ा थिक मटेरियल का होता है, और अगर आपकी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो डेफिनेटली ये आपको इचनेस कॉज कर सकता है। और इचनेस से अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो रैशेस भी होगा, एंड आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग टू recommend you to wear this kind of shapewears on a daily basis, especially in summer. यस, आप विंटर में इसको डेली बेसिस में पहन सकते हो, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। समर में डेफिनेटली आप ओकेशनली पहन सकते हो, लाइक कोई भी फंक्शंस या ओकेशंस हो, फैमिली में फ्रेंड्स के साथ कहीं पे जाना हो, कुछ स्पेशल दिन हो, तो डेफिनेटली यू कैन वेयर दिस। एंड या आई थिंक दैट्स ऑल, आई सेड एवरीथिंग आई नो अबाउट टमी टकर्स एंड शेपवेयर। तो अभी जल्दी से ये शेपवेयर को मैं डिफरेंट आउटफिट्स के साथ पहन कर आपको दिखा देती हूँ कि क्या डिफरेंस with and without wearing shapewears. If you like this video and find this video helpful, तो please मेरे channel को subscribe जरूर कीजिए and give this video a big fat thumbs up, subscribe, hit the bell icon and share this video with your friends, your family, comment down below. And yeah, I will meet you soon in my next video. Until then, bye.